I am Dr.Ashok Kumar Saini, Associate Professor in Mathematics in BLJS College Tosham. Today I will deliver lecture on Jacobians for the students of BSC 6th Sem final year, third year, on the book Real and Complex Analysis. The introduction part is: the term Jacobian is coined after the name of mathematician Carl Gustav Jacobi. Carl Gustav Jacobi, Jacobian of a function, describes the orientation of a tangent plane to the function at a given point. Again, we repeat. The term Jacobian is coined after the name of mathematician Carl Gustav Jacobi. The Jacobian of a function. The Jacobian of a function describes the orientation of a tangent plane to the functions at a given point. If a function is differentiable at a point, the derivative is given in coordinates by the Jacobian. But a function does not need to be differentiable for the Jacobian to be defined. If a function is differentiable at a point, its derivative is given in coordinates by the Jacobian. अगर फंक्शन कोई डिफरेंशिएबल एट ए पॉइंट तो उसका डेरिवेटिव differentiable at a point is given in coordinates by the Jacobian. But a function does not need to be differentiable for the Jacobian to be defined. कोई ज़रूरी नहीं कि फंक्शन डिफरेंशिएबल हो for the Jacobian to be defined, since only the partial derivatives are required to exist. क्योंकि इसमें partial derivative चाहिए हमें. The importance of the Jacobian lies in the fact that it represents the best linear approximation to a differentiable function. The importance of the Jacobian lies in the fact that it represents the best linear approximation to a differentiable function near a given point. Best linear approximation to a differential function near a given point. In this sense, the Jacobian is the derivative of a multivariate function. Jacobian क्या होता है? Is the derivative of a multivariate function. Jacobian is the derivative of a multivariate function. Jacobians, if u and v are functions of two independent variables x and y possessing first order partial derivatives, if u and v are functions of two independent variables x and y possessing first order partial derivatives with respect to x and y, then the determinant curly u by curly x, curly u by curly y,
curly vy curly x curly vy curly y is called the Jacobian. Jacobian of u and v with respect to x and y. This Jacobian is usually denoted by curly ub but a curly xy or Jacobian of ub with respect to xy. Similarly, if u, v and w are functions of three independent variables, x, y, z possessing first order partial derivatives with respect to x, y and z, then the Jacobian of u, v and w with respect to x, y and z is the determinant curly u by curly x curly u by curly y curly u by curly z curly v by curly x curly v by curly y curly v by curly z curly w by curly x curly w by curly y curly w by curly z. The Jacobian is usually denoted by curly u v w by curly x y z. दोबारा देखिए एकदम रफ्तार ना बंद. u v and w are functions of three independent variable. पहले टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल के थे, अब तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के तीन फंक्शन एक्स वाई जेड पोजेसिंग फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई एंड जेड. देन जैकोबियन ऑफ एक्स u v and w with respect to x y and z is the determinant curly u by curly x curly u by curly y curly u by curly z curly v by curly x curly v by curly y curly v by curly z curly w by curly x curly w by curly y curly w by curly z. This Jacobian is usually denoted by curly u v w by curly x y z or j u v w by x y z. If u1 u2 un are functions of n independent variables x1 x2 xn, then the determinant curly u1 by curly x1 curly u1 by curly x2 curly u1 by curly xn curly u2 by curly x1 curly u2 by curly x2 curly u2 by curly xn curly un by curly x1 curly u2 un by curly x2 curly un by curly xn is called Jacobian of u1 u2 un with respect to x1 x2 xn. nth कहता है if u1 u2 un are functions of n independent variables x1 x2 xn, then the Jacobian, then the determinant this is called Jacobian of u1 u2 u3 un with respect to x1 x2 xn. with respect to होता है Jacobian, जितने वेरिएबल होंगे उतने ही, जितने फंक्शन होंगे उतने ही वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे. This Jacobian is denoted by curly u1 u2 un by curly x1 x2 xn और Jacobian u1 u2 un take curl x1 x2 xn है. Remark, we can find Jacobians if the number of independent variables is greater than the number of functions. अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल ज़्यादा है नंबर ऑफ फंक्शन से तब भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं जैकोबियन को. फॉर एग्जांपल कंसीडर u इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड v फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड
Here u and b are two functions of the three variables x, y, z. The three different Jacobians are curly ub divided by curly xy, curly ub by curly yz, curly ub by curly zx. Theorem है, if the functions u1, u2, un are of the forms u1 is equal to f1 x1, u2 f2 x1 x2, un fn x1 x2 xn, then Jacobian of u1 u2 un divided by Jacobian of x1 x2 xn equal to curly u1y curly x1, curly u2y curly x2, curly uny curly xn. u1 सिंगल वेरिएबल का फंक्शन है, u2 टू वेरिएबल का फंक्शन है, un n वेरिएबल का फंक्शन हो. प्रूफ है इसका. Here u1 is a function of x1, u2 is a function of x1 x2, u3 is a function of x1 x2 x3, un is a function of fn x1 x2 xn. तो curly u1 u2 un बटे curly x1 x2 xn is equal to curly u1 by curly x1 0 0 0, curly u2 by curly x1, curly u2 by curly x2 0 0, curly un by curly x1, curly un by curly x2, curly un by curly x3, curly un by curly xn is equal to curly u1 by curly x1, curly u2 by curly x2, curly un by curly xn. Therefore Jacobian लिया u1 u2 u3 un with respect to x1 x2 xn. पहला फंक्शन है curly u1 by curly x1, बाकी जीरो हो गए, x2 x3 xn 0. दूसरे का क्या है, curly u2 by curly x1, curly u2 by curly x2, बाकी जीरो. तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बन गई है डिटर्मिनेंट. और लास्ट में curly un by curly x1, curly un by curly x2, curly un by curly x3, curly un by curly xn. तो ये क्या हो गया, curly u1 by curly x1. इसको अगर एक्सपेंड करें हम डिटर्मिनेंट को, curly u2 by curly x2, curly un by curly xn. Hence the result. Chain rule for Jacobian. If u and v are functions of two independent variables x and y, which are themselves functions of two independent variables r and s, then curly ub with respect to curly rs equal to curly ub with respect to curly xy cross curly xy with respect to curly rs. Proof. Here u, b are functions of x, y and x, y functions of rs. Therefore u, b are composite functions of rs. u, b क्या है, are composite functions of rs. Curly u by curly r. If u, b are functions of two independent variables x and y, which are themselves functions of two independent variables r and s, then curly u, b बटे curly r s
इक्वल टू करली यू बी बटे करली एक्स वाई इंटू करली एक्स वाई बटे करली आर एस. Here u v are functions of x comma y and x y are functions of rs. Therefore u v are functions of rs. Composite है भैया. Chain rule u v are functions of two independent variables x and y which are further functions which are themselves functions of two independent variables r and s. x क्या है, r and s का फंक्शन है, y क्या है, r and s का फंक्शन हो अगर तो कंपोजिट है ये. u v क्या फंक्शन ऑफ जैकोबियन u v विद रिस्पेक्ट टू r s डायरेक्ट. तो करली u v विद बटे करली एक्स वाई जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू r s. The proof here u v are functions of x y and x y are functions of rs. ठीक. Therefore u v are composite functions of rs. Therefore u v are composite functions of rs. तो करली u by करली r इक्वल टू करली u by करली x बटे करली r प्लस करली u बटे करली y बटे करली r. करली u by करली s करली u by करली x बटे करली s करली u बटे करली y बटे करली s करली b बटे करली r इक्वल टू करली b बटे करली x बटे करली r प्लस करली b बटे करली y बटे करली r with respect to s. करली b y करली x b x y करली s प्लस करली b बटे करली y बाय करली s. नाउ करली u b बटे करली एक्स वाई बटे करली आर एस इक्वल डेटर्मिनेंट करली u बाई करली x करली u बटे करली y करली b बाई करली x करली b बटे करली y इंटू डेटर्मिनेंट करली x बटे करली r करली x बटे करली s करली y बटे करली है. इनका खोल लिया बस और क्या. बाय जैकोबियन ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इंटू जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू आर एस डेटर्मिनेंट. और इसको इस फर्स्ट की रो सेकंड की कॉलम इस तरह से गुणा करते हैं तो हमारे पास इक्वल करली u बाई करली x बटे करली r करली u बटे करली y बटे करली r करली u बाई करली x बटे करली s करली u बाई करली y करली y बाई करली s. फर्स्ट रो सेकंड कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम करली b बाई करली x करली y बाई करली x बटे करली r प्लस करली b बटे करली y बाई करली r करली b बाई करली x फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम करली b बाई करली x बटे करली s प्लस करली b बटे करली y बाई करली s. तो इसको सिंप्लीफाई करो तो वी आर रिटेनिंग एक मिनट ये था
इसको सिंप्लीफाई करते हैं अगर, तो कर लीजिए भाई कर लिया आर, कर लियो वाई, कर ली एस, कर ली बी वाई, कर ली आर, कर ली बी वाई, कर ली एस। इससे आएगा देखिए यूज ए फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स कर ली यू वाई, कर ली आर, ठीक पहला, फिर कर ली यू वाई, कर ली एस दूसरा, फिर कर ली बी वाई, कर ली आर, कर ली बी वाई, कर ली एस, ठीक। एंड दिस इज इक्वल टू जैकोबियन यू बी विद रिस्पेक्ट टू आर एस। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। और पंखे का क्या कह रहे थे, कौन सा था पंखा, कौन सा था पंखा? फिर वो नीचे है वो लगा देंगे। अच्छा और नीचे कम है, ठीक है, वाजाओ इलेक्ट्रिशियन वो लगवा देंगे इनमें। हाँ ये तो बीमार कर देगा फराटा। अब खुल खा गया ये यार, थोड़ा बहुत तो खुला है, अच्छा बाकी 2 बजे तक ठीक है खुला, बाकी बंद हो जाएगा। बंदा दुकान खुल गई थोड़ी बहुत है। मोबाइल का खुला कुछ, कोई बाई चांस ही है जी, अच्छा बाकी तो नहीं खुला। If u, v, w are functions of three variables x, y and z which are themselves functions of r, s and t. If u, v, w are functions of three variables x, y, z, x, y and z which are themselves functions of r, s and t, then we have curly u, v, w with respect to रिमार्क है 3 वेरिएबल का एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड फर्दर 3 वेरिएबल के फंक्शन हैं आर एस टी, उसके एक्सपेंशन है ऊपर वाले। तो करली यू बी डब्ल्यू जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी इज इक्वल टू जैकोबियन ऑफ यू बी डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड इंटू जैकोबियन एक्स वाई जेड विद रिस्पेक्ट टू आर एस टी। थ्योरम है इफ u is a function of x y, v is a function of x y are functions of x and y, and if the inverse function x equal to phi ub, y equal to psi ub exists, then curly u y curly v and curly x y curly u v बटे curly x y, curly x y बटे curly u v equal to 1, ये होता है। Proof, since u v are functions of x y, then we have u is a function of x y, v is a function of x y, differentiating partially with respect to u and v, we have 1 is equal to curly u by curly x बटे curly u प्लस curly u by curly y बटे curly u 0 इक्वल curly u by curly x बटे curly v प्लस curly u बटे curly y। Since u and v are functions of x and y, तो डिफ्रेंशिएट करो पार्शली विद रिस्पेक्ट टू यू, यू को यू के साथ करेंगे तो एक आ गया लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो एक्स यू विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स विद रिस्पेक्ट टू यू, यू विद रिस्पेक्ट टू वाई, वाई रिस्पेक्ट टू यू। तो if f is a function of x y, b is a function of x y, and if the inverse functions
इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। x इज ए फंक्शन ऑफ यू बी, y इज ए फंक्शन ऑफ यू बी एग्जिस्ट। देन जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट एक्स वाई, और उसका इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। जैकोबियन ऑफ एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू यू बी 1 होगा अगर प्रोडक्ट कर देंगे तो 0 इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स बटे करली वी प्लस करली यू बटे करली वाई बटे करली वी। 0 इक्वल टू करली वी बाई करली एक्स बटे करली यू प्लस करली वी बटे करली वाई बटे करली यू। 1 इज इक्वल टू करली वी बाई करली एक्स बटे करली वी प्लस करली वी बटे करली वाई बटे करली वी। ठीक, नाउ करली यू वी बटे करली एक्स वाई बटे करली एक्स वाई, इनका हमने जैकोबियन लिख दिया। ठीक, करली यू बाई करली एक्स। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन की हमने, पहले की रो दूसरे की कॉलम, पहले की रो दूसरे की कॉलम। तो ये अगर हम इसको देखें, क्योंकि हमने ये 1 निकाला है पहला, ये दूसरा 0 निकाला है, तीसरा 0 निकाला है, और ये 1 है, और इसको एक्सपेंड करें डिटरमिनेंट को 1 आ गई। ठीक, नोट है। अब 3 पे इस थ्योरम का एक्सपेंड करते हैं 3 वेरिएबल पे। u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, v is a function of x y z and w is a function of x y z। अगर ऐसा हो और 3 functions of x y z such that the inverse functions x is a function of phi 1 u v w, y is a function of phi 2 u v w, z is a function of phi 3 u v w exist, then curly u v w बटे curly x y z बटे curly u v w equal to 1। ठीक, और इनवर्स इफ जैकोबियन ऑफ यू बी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई इज नॉट नॉन जीरो, तो इसको इन्वर्ट कर सकते हैं। जैकोबियन ऑफ यू वी बटे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई इक्वल टू 1 डिवाइड बटे जैकोबियन ऑफ एक्स वाई बटे जैकोबियन ऑफ यू वी। अब कुछ एग्जांपल करते हैं। इफ़ यू इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई, बी इज ए फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, एक्सप्रेशन हैं। फाइंड जैकोबियन ऑफ यू वी विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई। यू दे रखा है आपका, तो करली यू बाई करली एक्स 2x माइनस साइन वाई हो गया। करली यू बटे वाई ट्रीटिंग एक्स एज कॉन्स्टेंट नाउ माइनस एक्स कॉस वाई, एक्स स्क्वायर का 0 हो गया माइनस एक्स एज इट इज, साइन वाई का कॉस वाई होता है नेगेटिव एज इट इज। बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वाई, देयरफॉर करली बी बाई करली एक्स इक्वल टू 2x वाई स्क्वायर प्लस 1 एंड करली बी बटे करली वाई इक्वल टू 2x स्क्वायर वाई प्लस 1। वी को विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया, बी को विद रिस्पेक्ट टू वाई। तो बाई डेफिनेशन ऑफ जैकोबियन बी है करली यू बी बटे करली एक्स वाई इज इक्वल टू करली यू बाई करली एक्स करली यू बटे करली वाई करली यू बी बटे करली एक्स करली बी बटे करली वाई इज इक्वल टू 2x माइनस साइन वाई माइनस एक्स कॉस वाई। टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर वाई प्लस 1। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड कर दो।
ठीक कर दिया, यही आंसर है। नेक्स्ट इज इफ u इज इक्वल टू log x प्लस e की पावर x प्लस एक्स वाई जेड, b इक्वल टू e की पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, फाइंड द जैकोबियंस u b विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई कोमा u b विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड। तीन जैकोबियन निकालने हैं u b विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स। तो u दे रखे आपका log x प्लस e की पावर x प्लस एक्स वाई जेड, तो करली यू वाई करली एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई जेड, करली यू बटे करली वाई इक्वल टू ई की पावर वाई प्लस जेड एक्स, करली यू वाई करली जेड इक्वल टू एक्स वाई। डिफ्रेंशिएट कर लिए जस्ट। ऑल्सो v क्या है, e की पावर x प्लस log y प्लस एक्स वाई जेड, तो करली बी वाई करली x e की पावर x प्लस वाई जेड, करली बी बटे करली वाई 1/y प्लस एक्स जेड, करली बी वाई करली जेड एक्स वाई। नाउ जैकोबियन ऑफ u v विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई, ये जैकोबियन करली यू वाई करली एक्स, करली यू बटे करली वाई, करली वी बटे करली एक्स, करली वी बटे करली वाई, इनकी वैल्यूज रखो, एक्सपेंड करो, तो माइनस ई की पावर वाई प्लस एक्स जेड प्लस 2z है क्या है, इंटू ई की पावर जेड प्लस वाई जेड, तो ये आ गया। इसी तरह यू बी जैकोबियन विद रिस्पेक्ट टू वाई जेड, तो ये एक्स वाई ई की पावर वाई माइनस 1/y एंड यू बी विद रिस्पेक्ट टू जेड एक्स, करली यू वाई करली जेड, करली यू बटे करली एक्स, करली वी वाई करली जेड, करली वी वाई करली एक्स। डिफ्रेंशिएट करो यू को वी को एक्स और जेड के रिस्पेक्ट में और एक्सपेंड करो, तो एक्स वाई ई की पावर एक्स माइनस 1/x, ठीक हो गया। नेक्स्ट इफ एक्स इज ए, दिस इज एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा, जेड इक्वल टू जेड, देन इवेल्युएट जैकोबियन ऑफ एक्स बाय जेड विद रिस्पेक्ट टू आर थीटा जेड। तो आई थिंक इट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स देखेंगे, MD 2015, 14, 12, 4 ये आ रहा है। तो हेयर x इक्वल टू आर कॉस थीटा, तो x विद रिस्पेक्ट टू आर करते हैं तो कॉस थीटा, x विद रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं तो माइनस आर साइन थीटा, x विद रिस्पेक्ट टू z करते हैं तो 0। ऑल्सो x इक्वल टू आर साइन थीटा,